Let me read you an interesting question someone sent in. I get really horny on my period, मगर सिर्फ period sex के idea से भी I feel grossed out. And my boyfriend is even more grossed out. Period blood just seems super disgusting. Period के दौरान sex करना ठीक है या नहीं? Today, let's talk about period sex. But before we get to that, I want to quickly remind you that I also have a podcast. So अगर आपको हिंदी sex education content audio पे सुनना है, तो do check out the Sex Podcast with me, Leeza Mangaldas, exclusively on Spotify. You can download the Spotify app and listen to it for free. Okay, now back to period sex. Period sex एक ऐसा टॉपिक है जिसके आइडिया से भी काफी लोग uncomfortable feel करते हैं. Some people spout archaic beliefs from religious texts to claim that it is bad or wrong and that it makes you impure or immoral, while कुछ लोग तो इसे unhealthy, harmful या disgusting मानते हैं. लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कभी भी उस बारे में properly सोचा ही नहीं है कि why do we feel this fear and disgust around menstruation and sex? It is mostly because of the shame जो हम अपने body के बारे में feel करते हैं, या you can say जो shame हमें feel करवाया जाता है because of the misogynistic social stigmas around female sexuality and menstruation. So let me break it down. It is perfectly fine to have period sex. In fact, for many people, अपनी period के time पर sex की desire ज़्यादा भी हो सकती है. And guess what? Sexual pleasure can provide relief from menstrual cramps and headaches. Plus, some people even enjoy the sensation of that extra lubrication during period sex. So, period sex immoral या गलत नहीं है. And it can even be something जो pleasure और relief दोनों provide करता है. If you feel horny on your period, it's okay to have sex. Of course, that said, there are also people who simply do not feel like having sex on their period. और वो भी बिल्कुल ठीक है. Sharing my personal experience, sometimes जब मैं periods में होती हूँ तो I do feel more aroused than usual. But other times, all I want to do is to curl up with a hot water bag and some snacks and be cranky. All I'm trying to say is that ये सब बस आपके mood के ऊपर depend करता है, rather than thinking कि period sex कोई गलत, गंदी या disgusting चीज है. So let's take this opportunity to remind ourselves कि menstruation life का एक normal part है. In fact, human existence के लिए एक vital part है. So, कोई भी gender हो, it's worth overcoming feelings of shame and disgust around periods. Alright, ये तो बात हुई period sex की, but now let's shed some light on the myths around it, particularly with regard to using protection. Let me read you another message that I received. My boyfriend and I are so confused about things like period के दौरान हमें sex करना चाहिए कि नहीं. On the one hand, ये एक time है जब हम unprotected sex कर सकते हैं and I won't get pregnant, right? But on the other hand, क्या period blood से sexually transmitted infections होता है? Many people think that you can't get pregnant from unprotected sex on your period. But while pregnant होना unlikely है, it's not impossible. So it's best to always use protection. अगर आप अपने period पे है और condom के बिना sex करते हैं, तो भी प्रेगनेंसी का स्मॉल चांस रहता है बिकॉज स्पर्म कैन लिव इन द बॉडी फॉर अ कपल ऑफ डेज. एंड हर किसी की ओव्यूलेशन साइकिल का ड्यूरेशन भी वेरी कर सकता है. और तो और कुछ लोग कभी कभी ओव्यूलेशन के टाइम पर भी ब्लीड करते हैं या किसी और रीजन से वैजिनल ब्लीडिंग हो सकती है एंड इट्स पॉसिबल टू मिस्टेक दैट फॉर योर पीरियड. Basically, there's a lot of room for error when you're trying to identify your fertile window by yourself. अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं और आप किसी और बर्थ कंट्रोल का यूज नहीं कर रहे हैं, then it's best to always use condoms while having sex, even when you have your period. Next, चलिए जानते हैं about infections. Period blood is not inherently diseased or dirty. अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेंगे. बट अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो पीरियड ब्लड से और रादर एनी ब्लड से ट्रांसमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इफ आपने और आपके पार्टनर ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट नहीं करवाया है तो इट्स बेस्ट टू ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, whether or not you're on any other form of birth control and whether or not you have your period. I hope this video makes you feel a little bit more comfortable thinking about sex and menstruation, and I hope it has also made you more aware of how important it is to always use protection.
I hope you liked this video. Please do share, please do subscribe to my channel और मुझे Instagram पर भी follow करें. My handle is @Leeza Mangaldas and you can DM me your questions there. शायद आपके सवाल का जवाब भी अगले वीडियो में मिल जाए. I would also love it if you checked out my podcast. It's called The Sex Podcast with me, Leeza Mangaldas, exclusively on Spotify. I will see you soon. Bye.